Good morning, kids. How are you? I hope all you are fine and good. Myself, Pooja Peshwani, your class teacher. This is video for class Golden Bells, and today we will study subject English and letter capital E and small e from your book जूनियर केजी लिटरेसी स्किल्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेटर ई, कैपिटल लेटर ई एंड स्मॉल लेटर ई। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, ई का फोनिक साउंड होता है ए। ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर इंजन, ई फॉर ईगल, ई फॉर एग। E is also for E for elbow, E for emu, E for earrings. Trace the letter capital E and small letter E with your finger. Now trace with crayons of different colors. तो बच्चों, इन डॉट्स को ट्रेस करते हुए हम कैपिटल लेटर E एंड स्मॉल लेटर E बनाना सीखेंगे। So let's start. First of all, draw one standing line from top to bottom like this. Then go to the top and draw one sleeping line. Then go to the middle and draw one more sleeping line like this. Then go to the bottom and draw one sleeping line. Makes capital letter E. First, draw one standing line, top to bottom. Go to the top and draw one sleeping line. Then go to the middle and draw one more sleeping line like this. And go to the bottom and draw one more sleeping line like this. Makes capital letter E. सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर टॉप से एक स्लीपिंग लाइन, फिर मिडल से एक और स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, फिर बॉटम से एक और स्लीपिंग लाइन। कैपिटल लेटर ई। नाउ वी विल मेक स्मॉल लेटर ई। स्टार्ट फ्रॉम द मिडल एंड ड्रॉ वन स्लीपिंग लाइन लाइक दिस एंड ड्रॉ अ कर्व around it. Makes small letter E. Start from the middle and draw one sleeping line, then a curve around it. Makes small letter E. Small letter E. Now I will show you a picture card of letter E. Look at this picture card, children. This is capital letter E and this is small letter E. E for elephant. This is elephant. This is an elephant. And back side of this picture card, say the words beginning with the letter E. इस पिक्चर में देखिए बच्चों, E लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हमें बताने हैं। E for elephant and more. E for egg, E for eagle, E for emu. So children, I hope you understood capital letter E and small letter E. Practice capital letter E and small letter E given on page number 44 and 45 in your book. Thank you. Have a good day.